Good evening, boys and girls. Clearance, please. Audio clearance. Umar Shankar, Anurag, Soni. Audio clearance, please. Yes, I am doing well. Lucy Star 6656. All clear. Thank you so much. So, boys and girls, very good evening and welcome to GFG Khaleel Khan and Operating System PYQ Series Part 2. Earlier we have seen Part 1 और आज हम Part 2 स्टार्ट करेंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल सिस्टम। ये दो पार्ट्स रह गए थे पिछले सेशन में एंड वी प्रॉमिस वी आर गोइंग टू टेक अप दैट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम एज फार एज गेट इज कंसर्न। सो आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू हैव ए वेरी यूजफुल एंड फ्रूटफुल सेशन। ओके, लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार मैं री एम्फसाइज कर दूं आपको कि दिस PYQ series is basically meant for those people, those students, those learners or those GATE aspirants जिन्होंने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो अभी अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर नहीं करे हैं उनके लिए सीरीज मीनिंगफुल नहीं रहेगी, जस्टिफाइड नहीं रहेगी। ठीक है, तो आई बिलीव दैट यू हैव डन द सब्जेक्ट वेरी वेल और आपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए होंगे। तो दिस PYQ series will be helpful for basically solving and consolidating the concepts plus basically revising, making the iterations for PYQs and learning some shortcuts from this discussion. So that is the primary objective of this. It is absolutely not meaningful for those who have not studied the subject and that's why you would unnecessarily get disturbed. So my advice would be पहले subject complete कीजिएगा, फिर उसके बाद आप PYQ देखें, then only it will be meaningful. Okay? अदरवाइज यू विल फील बहुत फास्ट जा रहे हैं, बहुत ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, दैट विल बी टोटली अनजस्टिफाइड। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा, पहले मैं आपको चांस दे रहा हूं सॉल्व करने का, जैसे ही बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं फिर मैं अपना यहां पर सोल्यूशन दे रहा हूं। तो चलिए बच्चों, प्लीज स्टार्ट ऑफ। सिंपल क्वेश्चन, फिक्स पार्टीशंस के ऊपर क्वेश्चन है यूजिंग बेस्ट फिट एलोकेशन पॉलिसी। प्लीज रीड वेरी वेल, मेक एन अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड। Gyanchand scientist, good evening beta. Come on, give me the answer for this, boys and girls. Be careful, Nishu Kumar. Good evening Nishu Kumar. आंसर दीजिएगा प्लीज। आदित्य वेलगुड़े, गुड इवनिंग। चलिए आदित्य बताइए आंसर क्या है इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वंश धामेचा, प्लीज टेल मी द आंसर। Lucy Star is saying option is D. निशु कुमार इज सेइंग ऑप्शन ए। चलिए वर्कआउट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये क्वेश्चन है फिक्स पार्टीशंस में। इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स पार्टीशंस। साइजेस है 200 KB। सो लेट्स ड्रॉ द साइजेस ऑफ पार्टीशंस। 200 KB का पार्टीशन है, 400 KB का पार्टीशन है, 600 है, देन 500 है, देन 300 एंड 250। तो थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस कर लेंगे। ठीक है, so let us mark the sizes. 200 KB, 400 KB, 600 KB,
500 KB, 300 KB, 250 KB। अब पूछा ये गया है कि where KB refers to kilobyte, these partitions need to be allocated to 4 processes of sizes 357, 210, 468, 491 in that order. और हमें algorithm use करना है best fit. Best fit algorithm is to be used. Which partitions are not allocated, boys and girls? Not allocated पूछा गया, allocated नहीं। तो ये सारे रिक्वेस्ट असाइन होने के बाद, ये प्रोसेसेस allocate होने के बाद कौन से पार्टीशंस विल नॉट बी allocated? चलिए स्टार्ट करेंगे बेस्ट फिट के लिए। 357 यूजिंग बेस्ट फिट नेचुरली विल गो इनटू 400K, सो 357 यहां पे आएगा। चलिए नेक्स्ट, 210 के भी यूजिंग बेस्ट फिट कहां जाएगा? 250 में जाएगा, 210 यहां पे आएगा। 468 यूजिंग बेस्ट फिट आएगा 500 में, 468 यहां पे आएगा। 491 नेचुरली 600 में जाएगा, 491। फिर आप देखिएगा जो दो पार्टीशन बच गए हैं वो है 300 एंड 200। Hyderabad festivity, Gyanchand, everybody is right. So therefore, boys and girls, as you said, correct answer is option A. Correct answer is option A. I hope everybody is clear. तो आपको पता होना चाहिए best fit policy. Best fit policy is what? The smallest allocation, smallest free available partition. जो सबसे ज्यादा available partition में smallest होगा वो हम allocate करेंगे. So that's the answer for this. चलिए next question. Come on, tell me, these are simple reasoning question है, काफी important है। मैं चाहूंगा कि यू स्टडी वेल ईच ऑफ द ऑप्शन, स्टडी वेरी वेल एंड देन रिस्पॉन्स। नयन पाटिल बेटा, अंडरस्टैंडिंग ये है कि पीवाईक्यूज के मल्टीपल रिविजन्स होना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम के क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं, पर्टिकुलरली थोड़े क्वेश्चन जो मैंने क्लास में भी वर्कआउट नहीं किया, यहां पर मैं वर्कआउट कर रहा हूं, तो इस लिहाज से मैं कहूंगा कि नयन पाटिल प्लीज अटेंड, प्लीज अटेंड। बास क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफी टिपिकल क्वेश्चंस है, सो मैं चाहूंगा कि यू अटेंड एंड ट्राई टू सॉल्व, इट विल बी गुड प्रैक्टिस फॉर यू। come on boys and girls, yes, आराम से कीजिएगा एंड ऑल्सो ऑप्टिमाइज द टाइम। टाइम इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल, एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सो आई बिलीव PYQ series is a good platform to practice time. Don't casually solve it. Imagine as if you are working in the exam and then you work out. Okay, many people have given the answer. चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। Consider allocation of memory to a new process. Assume that none of the existing holes in the memory will exactly fit the process. मतलब प्रोसेस की साइज होल की साइज से बड़ा है, hence a new hole of smaller size will always be created after allocation is made in any of the existing holes. Which one of the following statements is true? चलिए स्टार्ट करेंगे। The hole created by worst fit is always larger than the hole created by best fit. See, it may always हम नहीं कह सकते, it may be sometimes equal to first fit. Equal भी हो सकता है, equal भी हो सकता है, इसलिए हम ये कहेंगे always larger is incorrect. The hole created by best fit is never larger than the hole created by first fit. बिल्कुल सही है। Best fit is the policy जो सबसे smallest hole, free hole create करेगा, right? So it will never be larger than what is created by first fit. So therefore this is absolutely correct. The hole created by first fit is always larger than the hole created by next fit. So naturally wrong. The hole created, I mean, because it will again be equal to भी हो सकता है। The hole created by next fit is never larger. Again it can be larger. Why not? Is it not? So therefore this is also wrong. So correct answer as you said is B. B बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टार्ट, आई मीन केयरफुली आंसर कीजिएगा प्लीज। रिलेटेड टू एड्रेस ट्रांसलेशन इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। वर्चुअल मेमोरी में एड्रेस ट्रांसलेशन के ऊपर ऐसे कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो बॉयज एंड गर्ल्स यू नीड टू लर्न द मैकेनिज्म एंड सॉल्व इट। कम ऑन।
न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, यू हैव टू गिव अ न्यूमेरिकल आंसर, परहैप्स इंटीजर आंसर। प्रशांत चौधरी, रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ा दीजिएगा, रिवीजन अच्छा इंप्रूव कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर यू कैन परफॉर्म वेल इन द टेस्ट सीरीज। Revision is the key for improving your marks. Anybody, what is the answer? 6596, Vansh Dhamecha. Come on, other people also please try. Simple logical question hai. Yes, Nishu, that's absolutely correct. Okay, Tulika, 6596. राइट, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पेज टेबल आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो यहां पर। ओके, द पेज नंबर, द फ्रेम नंबर, ये द पेज टेबल। पेजेस 0, 1, 2, 3 आर स्टोर्ड इन द फिजिकल फ्रेम्स। 4 पेजेस है, 0, 1, 2, 3। They are available in the frames, you can say 1320, 1320. Page size 2048 bytes, ठीक है। Virtual address 2500 gets translated to what physical address? का physical address क्या होगा? तो हमें करना क्या है? We have to divide the page number is given by virtual address divided by page size, integer division. 2500 divided by 2048, this will go one time, so therefore referred page number है page number 1। ऑफसेट क्या बनेगा? ऑफसेट विल बी गिवन बाय वर्चुअल एड्रेस मॉड्यूलो पेज साइज, ये आपको शायद पता हो, ठीक है, दिस वुड बी नोइंग इट। मॉड्यूलो विल गिव यू द ऑफसेट, तो 2500 मॉड्यूलो 2048 will give you how much offset? 452. Is it 452? 2500 minus 2048, 252. Sorry, 452. So therefore, the referred page number, boys and girls, please observe, the referred page number 1 is available in frame number 3. Frame number 3. तो physical address क्या बनेगा? Physical address will be base address of page क्या होगा? Page frame number 3 multiplied by size of the page 2048 plus the offset. Offset क्या है? 452. So boys and girls, ये होगा आपका formula for physical address. Base address of the page frame number plus the offset, that will give you the physical address. So therefore the answer for this is 6596. So 6596 is the answer. So that's correct, 2 mark question. Very good. Okay, that's an important concept. Please remember this, conceptualize, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा प्लीज। रिलेटेड टू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, रिलेटेड टू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, फिर से एक बार एम्फसाइज कर रहा हूं बच्चों को कि this will be useful, this series PYQ series will be useful only for those who have already studied the subject, already गेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यूजफुल है। वंश धामेचा, यू कैन डू द सेम थिंग, और उसी तरह से अगर हमें पूछा गया तो फ्रॉम फिजिकल एड्रेस यू कैन कैलकुलेट द फ्रेम नंबर, that frame number refer to which page you try to find, and follow the same logic in the reverse direction. Once Dhamecha, you can follow the same concept in the reverse direction. Come on, Tulika, Anurag, Soni, Nishu Kumar, Sneha, please tell me what is the answer for this. Number of page faults मुझे बताइए। टोटल रेफरेंसेस में हम लेंथ ऑफ रेफरेंसिंग निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है लेंथ ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग।
is 15. So using optimal replacement, LRU है sorry. Using LRU replacement, please tell me what is the number of page faults. Please tell me number of page faults. Come on, do it. Simple question है, मुझे वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है. प्रशांत is saying 9. क्या 9 है? Everybody agree to 9 page faults with LRU? Does everybody agree to 9 page faults with LRU for this reference string? Come on, boys and girls. Simple question. I need not work. I hope you can do it. Number of page faults using LRU for the given reference string are how many? कितने frames है? 4 frames है. There are 4 frames. Please observe. अगर किसी को कोई मुश्किल हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज. I will work out. वरना it's a very direct question. Okay, Kuldeep Verma is also saying 0.6. Yes. So boys and girls, the number of page faults are 9. So therefore page fault rate will become 9 by 15. 3 by 5. 0.6 is the answer. क्योंकि number of accesses, memory accesses, every reference will cause a memory access. Every reference will cause a memory access. So therefore number of memory accesses बनेंगे 15. So over 15 the number of page faults are 9. So page fault ratio, page fault rate आपके बनेगा 9 by 15. चलिए next question. Tell me, this is interesting, simple question, बहुत simple question है 1 mark का. I am very sure everybody agree to this. Everybody can tell me the answer for this. Very good, Prashant Chaudhary. Very good. Continue your. Lucy Star. We have the session tomorrow. Part 1. Come on, boys and girls. Give me the response of this. बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपने पहले भी PYQ किए हैं तो फिर से एक बार कीजिएगा. मल्टीपल राउंड्स ऑफ PYQ इज डिजायरेबल. मल्टीपल राउंड्स ऑफ PYQ इज डिजायरेबल प्लीज. चलो, मेनी पीपल आर सेइंग दैट्स वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. बिल्कुल सही जवाब. कंसिडर डिमांड पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम विद 32 बिट लॉजिकल एड्रेस. सो वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू 32 बिट्स. Physical address is equal to 20 bits. Page size is equal to 2048 bytes, which is 2 kilobytes. Assuming that the memory is byte addressable, what is the maximum number of entries in the page table? Number of entries in page table का formula क्या है? Number of entries in page table is equal to number of pages. In page table is equal to number of pages. तो यहां पर कितने पेजेस है? द साइज ऑफ वर्चुअल एड्रेस पेज 2 पावर 32 डिवाइडेड बाई पेज साइज. पेज साइज क्या है? 2 पावर 11. ये बनेगा 2 पावर 21, राइट? 2 पावर 21. सो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एज यू सेड 2 पावर 21. वेरी करेक्ट. मेजॉरिटी हैज सेड 2 पावर 21. दैट इज करेक्ट. वो है कॉन्सेप्ट. देखिएगा ललित, इट विल स्टार्ट सून. जितना एग्जाम के नजदीक आप महारिविजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. इसलिए हम थोड़ा लेट कर रहे हैं महारिविजन. द रीजन फॉर डूइंग महारिविजन लेट इज सो दैट जस्ट नियरिंग टू द एग्जाम आपका अगर आप महारिविजन करोगे तो बेहतर रहेगा. वेरी करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज टेल मी द आंसर फॉर दिस. Come on, again page replacement आपने करना है, मैं नहीं करूंगा. How many page faults using modified optimal replacement? Using modified optimal replacement, please calculate the page fault rate. ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है.
I'll just read out the question. The operating system modification ये है कि operating system can predict, the operating system correctly predicts only up to next 4 page references, including the current page. The process accesses the pages in the following order. Assume you have 3 memory frames. So देखिएगा, you have 3 memory frames. Three frames के साथ how many page faults will happen with this reference string? Please work out and tell. Please work out and tell. I'll just start off आपके reference के लिए. Initially empty है तो first reference will cause a page fault, third will cause a page fault, 2 will cause a page fault. So far 3 page faults have occurred. So far 3 page faults have occurred. तो अब देखिएगा उसके बाद 4 को replace करने के लिए you have to see among the references 2, 3, 1. सबसे आखिर में 1 है. So in place of 1 you are going to bring 4. So 4th page fault. After that 2, 3 will not cause, 1 will cause a fault, right? So that way if you try to calculate, as you said, Nishu Kumar and others, so definitely the number of page faults are 6. Optimal replacement. Optimal replacement की ideology क्या है? You have to look into the future references and see which page among the one which is present in memory, जो pages memory में है उसमें से that is going to occur at the end, that is optimal replacement among the 4 references, because it can predict only up to 4 page references. इस तरीके से आपने करना है. That's a very direct question. 6 is correct. चलिए next question पर आते हैं. Come on, tell me the answer for this. MSQ boys and girls. This question is MSQ. Be careful and respond. Nishu Kumar is saying B, C, D. Okay. Come on, boys and girls, other people, please respond. A, B, D. Okay. चलिए रीड कर रहा हूं मैं. Which of the following tasks is or are the responsibility or responsibilities of the memory management unit in a system with paging based memory management system? Okay, paging based के लिए कौन सा correct है? True है. Allocate a new page table. New page table allocation is done by memory manager. It is not done by basically MMU. Memory management unit is not responsible. Memory management unit खुद page table है. ठीक है? An example of MMU is page table. So allocating a new page table कोई मतलब ही नहीं हुआ. This is not correct. Translating virtual address is the primary function of MMU. So therefore this is correct. Raising an exception, trap, interrupt when a virtual address is not found in the page table. Bilkul, that is also a function of memory management unit. Raising a trap when a process tries to write to a page marked with read only. मतलब the authentication है. Some process is having read-only permission on the page, and then your process is trying to access it, and write mode is basically a fault, an exception, an error, a trap. So therefore, definitely these also the function of MMU. So as you said rightly, B, C, D are the correct options for this question. Nishu Kumar, that's correct. That's correct. So boys and girls, as an MSQ, B, C, D is correct. Chaliye next question. Come on, respond to this. Multi-level paging का question है, important है. मल्टी लेवल पेजिंग जो बच्चे वेट कर रहे हैं मल्टी लेवल पेजिंग के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स. अनुराग सोनी, ए कौन करेगा? ए करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर. ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर विल अलोकेट द पेज टेबल टू द प्रोसेस. अगर वर्चुअल मेमोरी है तो वर्चुअल मेमोरी मैनेजर. इज इट ओके अनुराग? कौन बॉयज एंड गर्ल्स, मल्टी लेवल पेजिंग का क्वेश्चन है, सोच समझ के बताइएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग.
Yes, MMU is a hardware. Page table is a hardware. Come on, boys and girls. I'll give you 2 minutes of time. Seriously, sincerely try कीजिएगा and then respond to me. Already some people have started giving the answer. Nishu Kumar and Anand 21 is saying 5. Okay. Come on, other people also please participate. Rudy code X lifts. Okay, 5. चलिए मैं start कर रहा हूँ because many people have given the answer. I am starting off here. Kindly see on board. This is my virtual address. Okay. ये हमारा virtual address है, which is of size 57 bits. Right. With L levels of paging for virtual to physical address translation. The page size is 4 kilobytes. So page size is equal to 4 kilobytes. So that means the offset D is equal to 12 bits. Offset D is equal to 12 bits. Here D है 12 bits. Now the remaining is used for multi-level paging. So this is P1 bits, this is P2 bits, this is P3 bits and so on. Okay. So let's say this one is X. All these are X. Equal size chunks or equal size pages, some PK. So these are all X. So if there are L levels of paging, so we can say that L into X plus 12 is equal to 57. This is equation 1. ठीक है? L is the number of levels of paging. L is the number of levels of paging. Please understand. This is the virtual address format. ये आपका virtual address format है. Outer page table को refer करने के लिए X, next level page table X, like that there are L levels of paging. Let us say we have to find the value of L. ठीक है? And the page offset D is 12 bits क्योंकि page size है 4 KB. So therefore this is 12. ठीक है? तो अब now for example Lx is equal to, what is the value of from here? L into X is equal to 57 minus 12. So ये बनेगा 45. ये बनेगा. So you call this as equation 1. To solve the value of X, or to get the value of X, right? I should have another equation because it's a 2 variable equation. तो मुझे और एक variable चाहिएगा. उसके लिए क्या है? General convention. Page table entry size is 8 bytes. Page table entry size is 8 bytes. तो general convention ये है कि outer page table generally should fit in one frame, at most one frame. The outer page table OPT should fit in at least one frame. So what is the size of OPT from this equation? Size of outer page table is equal to 2 power x number of entries in the outer page table multiplied by size of multiplied by entry size. What is entry size? 8 bytes. तो ये बनेगा 2 power x plus 3 bytes. ये आपका outer page table should है, ये outer page table size है. So this should fit in one frame of memory. One page frame size is same as page size to hold the page of the virtual address space. So this should fit in one frame of memory. So what is frame size? Page size and frame size will be same. So frame size is also 4 KB. So that means 2 power x plus 3 should be equated to 2 power x plus 3 outer page table should fit in one frame. Frame size is 2 power 12 bytes. So therefore this is the second equation. So from here what do we conclude, boys and girls? From here we conclude that x plus 3 is equal to 12 implies x is equal to 9. x की वैल्यू हमें पता चली है 9. The value of x is equal to 9. तो यहाँ पर equation 1 में we will substitute 9 into L is equal to 45. Therefore L is equal to 5. So therefore the number of levels of paging required so that the outer page table should fit in one frame is equal to 5. So the answer, as you said, is very correct, 5. Got it? Clear है सभी को? निशु कुमार, आनंद, जोरावर,
Is it clear? Everybody got with confidence how you are getting 5? Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और एक मल्टी लेवल पेजिंग पर है. कम ऑन, solve this question, boys and girls. Multi level paging question again. Come on, boys and girls. Similar question, multi level paging, 3 level paging पर question है. Multi level paging questions are important. Please work out. Come on, boys and girls, those who want to learn multi level paging, this is a good exercise. What is the page size in kilobytes of this computer is the question. Page size क्या होगा? And condition will be same. The outer page table should fit in 1 frame of memory. By default, अगर question में दिया नहीं गया है, then also you should assume the same thing. You should assume that the outer page table should fit exactly in 1 frame of memory. Nishu Kumar is saying C, 8 KB. चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिएगा यहां पर दो. आई विल सॉल्व इट विद 2 अप्रोचेस, सो प्लीज लर्न एंड कंसोलिडेट. इफ यू रिमेंबर एंड रिकलेक्ट, अगर आपने मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं विद मल्टी लेवल पेजिंग, I gave a generic formula, general formula for outer page table size with n level paging, boys and girls. If you remember and recollect, मेरे अपने lectures में मैंने एक general formula दिया था आपको for computing the outer page for the outer page table size with n level paging, given virtual address space, page size, and also the number of the page table entry size. So given these parameters, you can always find the outer page table size. वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लिख रहा हूं मैं. So this is approach 1, boys and girls. Approach 1. So if virtual address space or virtual address is given to be S bytes, और virtual address ही लेंगे, sorry. If virtual address is equal to S bits, page size is equal to 2 power P, okay, and let us say entry size, page table entry size is equal to 2 power C bytes, these bytes, okay. Virtual address is in bits. So boys and girls, from here
the outer page table with n level paging, outer page table with n level paging is given by 2 power s minus the number of levels of paging multiplied by p plus number of levels of paging multiplied by c. This is the formula you have to remember for outer page table size when you divide. अगर आप every levels of page table is divided into equal size pages or equal size chunks. If you remember and recollect, this is the formula. This will be the outer page table size in bytes. Remember, when every level of page table is divided into equal size pages, then this will be the formula. तो हमारे example में, हमारे problem में, the size of virtual address, please observe, what is the length of virtual address? 46 bits. So virtual address is equal to 46 bits. The number of levels of paging n is equal to number of levels of paging n is equal to 3. And the page size we have to find. Let's say page size is equal to 2 power p bytes. Entry size. What is the entry size? Page table entry is 32 bits. 32 bits is 4 bytes, which is 2 power 2 bytes. So therefore, outer page table size will be 2 power 46 minus 3 into p plus 3 into 2. This is outer page table size, bytes. So by default, this should be fitting in one frame. What is the frame size? 2 power p. So solving this equation, 46 minus 3p plus 6 is equal to p. So therefore, this 52 is equal to 4p, right? So therefore, the value of p is equal to 13. Therefore, page size is equal to 2 power 13, 8 kilobytes. Page size 8 kilobytes. Rudra Gaming, very good. Good evening. Boys and girls, very neat substitution. हाँ, provided subject to condition, ये formula मैंने अपने classes में derive किया था. So those who are my students can follow this. अगर नहीं, आप एक जेनरिक और अप्रोच 2 से, सेकेंड अप्रोच से आप सॉल्व करना चाह रहे हो विथ एड्रेसिंग अप्रोच 2, I can show you that also. In approach 2, you go with addressing. Addressing concept is also simple so that you learn and follow. Please observe. So with 3 level paging, the architecture of the virtual address will be as follows. I will have P1, P2, P3, D. 3 level paging architecture. This is the virtual address. Length of the virtual address is 46 bits. Okay. Page size is X we want to find. And let's say these Y bits are used to index into this equal size page, chunk size or equal size page on every page table. So we have to find the value of X because we say let page size is equal to 2 power X bytes. So from this equation, I can say that 3y plus X, boys and girls, is equal to 46. Equation 1. फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड पैरामीटर की जरूरत होगी. ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा आउटर पेज टेबल साइज अगेन लाइक प्रीवियस क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउटर पेज टेबल साइज विल बी 2 power y into 4 bytes. 2 power y into 4 bytes. So that means this is nothing but 2 power y plus 2. 2 power y plus 2 bytes. So this should fit in one frame. So that means 2 power y plus 2 is equal to 2 power x. Frame size is 2 power x because frame size is same as page size. So from this I can say x is equal to y plus 2. So substitute x equal to y plus 2 as equation 2 in equation 1. So from equation 1 I will write 3y plus y plus 2, 4y plus 2. 4y plus 2 is equal to 46. So this implies y is equal to 11. Is it not? Implies y is equal to 11. So therefore we want the value of x. So the value of x is equal to y plus 2 means x is equal to 13. So therefore page size. Therefore from this approach also page size is equal to 2 power 13, 8 kilobytes. Boys and girls, for your convenience I have done both the approaches. LY, KY, KMT. I would suggest you follow our Maha revision series या Smart revision series which is going to come up. तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा. PYQ series भी देख लीजिएगा. I am very sure with that
you can easily follow, you can easily understand. So boys and girls, I have shown both the approaches. जो भी approach आपको सही लगे, अच्छा लगे, आप you can follow. Both of them are correct. Both of them are correct. Approach 1 and approach 2. Okay, so these questions are important as far as multi-level paging is concerned. चलिए next question पर आते हैं with multi-level paging. Again a super important question. Let me see how many of you can give the correct response for this. Again star question on multi-level paging. Boys and girls, please work out. Please work out. Multi-level paging पर काफी important question है ये भी. Don't worry LYK, KMT, don't worry about confidence. आप just practice करते जाइएगा and I'm very sure you will never forget. You will never forget. Don't worry about the tension. Everybody will have tension. Everybody will have stress. You just focus on revision and solving PYQs and taking up test series mock test. Nishu Kumar is saying 4108. Very good. Come on, other people also please work out. अगर आप ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए तो फिर से एक बार वर्कआउट कीजिएगा, सो दैट जितने बार आप ज्यादा वर्कआउट करोगे क्वेश्चन MLP के, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. फिर से एक बार वर्कआउट कीजिएगा, इवन इफ यू हैव वर्कड आउट अर्लियर. And solve with confidence. That is very important for questions or problems like this. Confidence is very important. I'm starting off. Consider a 3-level page table to translate a 39-bit virtual address to a physical address as shown. 39-bit virtual address. The page size is 4 kilobytes and page table entry size is 8 bytes. The process P is currently using 2 GB of virtual memory. Important. Out of 2 per 39, 512 GB, the process is using only 2 GB virtual memory, which is mapped to 2 GB of physical memory. The minimum amount of memory. Question ये है कि minimum amount of memory. The minimum amount of memory required for the page table, that is page table size overhead across all levels is dash. Numerical answer type across all levels. Okay. Tulika is also saying 4108. So please understand, जिन्हें multi-level paging concept का थोड़ा भी अगर doubt है तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिएगा. This is my virtual address space 2 power 39. Okay. And from this virtual memory, the process is using only, let us say, is only using 2 GB. Let's say starting contiguously 2 GB. क्योंकि minimum amount of memory के लिए pages should be contiguous. Pages should be contiguous. So this is 2 GB of memory which is in use. Which is in use. ठीक है? Page size is how much? Page size is 4 KB. Look at that. Page size is equal to 4 KB. So now the question is, ये 2 power 13, I mean, ये 2 GB of process size के लिए, 2 GB of process size के लिए, अगर if I take this page size,
So how many pages this process will use? The number of pages the process will use is 2 GB 2 power 31 divided by 2 power 12. तो ये बनेगा 2 power 19. 2 power 19. Am I right? So the process for 2 GB of the address space will need 2 power 19 pages. And we'll assume that all 2 power 19 pages are contiguous for minimum size overhead. Our entry size है 8 bytes. So please remember the entry size is equal to 8 bytes. So now with one level paging, अगर आप one level paging जाते तो ये जो आपका page table होता, this is the page table. Boys and girls, this is the page table. So page table will have how many entries? Number of entries in page table equal to number of pages. So total virtual address space में number of pages कितने हैं? Number of pages in virtual address space n dash is equal to 2 power 39 divided by 2 power 12. 2 power 12, right? So this will be 2 power 27. 2 power 27. 2 power 27. So this page table will have 2 power 27 entries. Two power 27 entries. Okay. Out of 2 power 27 entries, we require only 2 power 19 entries. 2 power 19 entries are meaningful. 2 power 19 pages are meaningful, right? So that 2 power 19 entries, imagine these are the 2 power 19 entries. Imagine these are 2 power 19 entries which are meaningful for holding the pages or pointing to the pages of the program address space. So now with multi-level paging, we should divide this into pages of what size? So that will depend on the entry size and the page size. So page size is equal to 4 KB. 4 KB divided into, so therefore here I will say the chunk or the page size of page table will be equal to कितने entries बैठेंगे 4 KB में? 2 power 12 divided by 8 bytes, 2 power 3, 2 power 9, 2 power 9. ठीक है? So I'm going to take a chunk of size 2 power 9 and divide this into pages or chunks of size 2 power 9. So we'll divide this into chunks of size 2 power 9. So how many chunks will be required for 2 power 19 entries? Naturally 2 power 19 divided by 2 power 9. So here the number of pages needed, the number of meaningful pages needed is equal to 2 power 19 divided by 2 power 19 divided by 2 power 9 is equal to 2 power 10, 1024. So of this page table, I need only 1024 pages which are meaningful. Out of how much? Out of 2 power 27 divided by 2 power 9, 2 power 22. ठीक है? So I need 1024 pages of this, 1024 pages of this. Okay? So now to access those 1024 pages, I need the second level page table. To access these 1024 pages, I need second level page table, next level page table. So this page table will have how many entries? This will have 2 power 27. 2 power 27 divided by 2 power 9. We have divided this into chunks of size 2 power 9 entries. So this will become how much? 2 power 22. 2 power, 17, 10. 18. 2 power 18. Is it not? 2 power, am I right? 2 power 27 entries divided by 2 power 9, 2 power 18 entries. So out of 2 power 18 entries, only 1024 entries, 1024 chunks are meaningful. 1024 chunks. So for accessing that 1024 chunks, right, 1024 chunks, again I'm going to apply paging on this by selecting the same page size. So here again I will select the same page chunk size of 2 power 9 and we are going to divide this into 2 power 9 entries. So out of this 2 power 9 and 2 power 9, 2 power 9 and 2 power 9, so that is going to make 1024. 1024. So 2 chunks of this page table will be meaningful. 2 chunks will be meaningful, right? 2 chunks. Only 2 chunks will be sufficient to access 1024 entries of the of this. So therefore of this I need only 2 chunks or 2 pages. 2 pages.
So one level paging, two level paging, and now to access this, I need the outer page table. This is the outer page table, and as per the addressing, this has again 2 power 9 entries, out of which only 2 entries are meaningful. Only 2 entries are meaningful. So that means the total page table size overhead, total page table size overhead is equal to 1 OPT plus 2 pages of next level page table plus 1024 chunks of innermost page table. ये मेरा total overhead है. This is my total page table size overhead. Right? One outer page table size having 2 power 9 into 8. That is 4 KB. This is 4 KB. So each of size 4 KB. Each of size. So therefore 1 plus 2 plus 1024. So this will become 1027 pages. So here I will write 1024 plus 2 plus 1, each of size 4 KB. So this will become 1027 into 4 kilobytes. So this will come out to be 4108 kilobytes. So boys and girls, this is the answer for the question. In terms of kilobytes, when you want the answer, 4108. Prashant Jaiswal, slightly involved question. Yes, you have to bite your hand, right? But this is the approach. फिर से एक बार explain करने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा. Out of 2 power 39 size of the virtual address space or virtual memory, the process is using only 2 gigabytes of space. 2 gigabytes. So 2 gigabytes के लिए कितने pages लगेंगे? So page size is 4 KB. So number of pages are 2 power 19. So please follow carefully. Again, I'm explaining the whole concept. 2 power 19 and 2 power 19 pages. So therefore, the process actually is defined in terms of 2 power 19 pages. To access 2 power 19 pages, I need this page table, one level page table, which will have 2 power 27 entries, out of which 2 power 19 entries are meaningful. So therefore, for multi-level paging, we are going to divide this into pages or chunks of what size? That will depend on page size divided by entry size. How many entries will fit in one page? 2 power 9. So we are going to break up these pages into chunks or into pages of size 2 power 9. So 2 power 9. So how many pages will it get? 2 power 27 divided by 2 power 9, 2 power 18. लेकिन 2 power 18 में से only meaningful entries, meaningful pages will be 2 power 19 divided by 2 power 9. That is 1K. So 1K pages are meaningful. 1K pages are meaningful. So that means 1K entries will be meaningful here. Out of how many entries? 2 power 18 entries. Out of 2 power 18 entries, right? Only meaningful entries are this much. Only 2 entries are this 1024 entries are meaningful. So for going for multi-level paging, divide this second level page table into again chunks or into pages of size 2 power 9. So therefore I will get how many? I will get these many. 2 power 18 divided by 2 power 9 entries. 2 power 9 entries. So out of which only 2 entries are meaningful. Only 2 entries or 2 chunks are meaningful. So therefore I need 2 pages of this, 1024 pages of this one outer page table. And that is what I have written here. This outer page table, next level page table to, outer page table, next level chunk or next level page table chunks, and last or innermost page table chunks. So that is 1027 into 4, 4108 kilobytes. So as a numerical answer type, the answer for this question is 4108 kilobytes. Very correct. So boys and girls, this question have not even worked out in my regular batch. I used to give this as a homework question for my students to work out, but now I have worked out here on public platform, YouTube platform. ठीक है? So that's the way of solving this question. चलिए next question पर आते हैं. Come on, read this. This is based on effective memory access time, boys and girls. Work out. This is also an important question. Virtual memory with TLB for address translation. Virtual memory with TLB for address translation. Come on, super important question, boys and girls, please work out.
This question also I used to give as homework in my regular classes, but now I am working out. Boys and girls, please understand, these are all important things. Come on, Vansh Dhamecha, Tulika Datta, Prashant Jaiswal, LYK, KMT, please tell me the answer. Nishu Kumar is saying 155. Okay, let's start. Consider a paging system that uses a one-level page table residing in main memory and a TLB for address translation. Memory access time is 100 nanoseconds. Memory access time is 100 nanoseconds. TLB lookup, searching into TLB, takes 20 nanoseconds. Page transfer will take 5000 nanoseconds from disk. Assume that the TLB hit ratio is 95%. Page fault rate is 10%, and 20% of the total page faults, a dirty page is to be written, dirty page. 20% of the time dirty page. पेज मॉडिफाई अगर हुआ है तो डर्टी पेज कहेंगे, और मॉडिफाइड पेज के लिए आई नीड टू डिस्क एक्सेस, सेविंग एंड लोडिंग. Okay. TLB update time is negligible. The average memory access time in nanosecond rounded off to 1 decimal process. So therefore effective memory access time क्या बनेगा? Average memory access time या effective memory access time, let us write average memory access time is equal to hit ratio in TLB 0.95, 95%. तो जब hit होगा तो C plus M, lookup time plus access time. Lookup time क्या है for memory access time? 20 nanoseconds plus 100 nanoseconds. These in nanoseconds. ये हो गया है हिट रेशियो इन टीएलबी. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हिट रेशियो इन टीएलबी. फिर उसके बाद मिस रेशियो इन टीएलबी 0.05. ठीक है, तो ऑलरेडी यू आर लुकिंग अप इनटू टीएलबी, सो दैट टाइम विल बी 20. फिर उसके बाद पेज हिट या पेज मिस दोनों के लिए आपको पेज टेबल एक्सेस टाइम ऐड करना पड़ेगा. 100 नैनोसेकंड इज फॉर पेज टेबल एक्सेस, दिस आल्सो 20 नैनोसेकंड प्लस. अब यहां पर इसके बाद आइदर यू मे हैव ए हिट और यू मे हैव ए मिस. Either you may have a page fault or no page fault. अगर no page fault है मतलब page fault rate is 10%, page hit ratio is 90%, 0.9 into memory access time 100 nanoseconds. ठीक है, plus now miss ratio 0.1, that is page fault ratio 10%. ये जो page fault rate है 10%, वंश धामेचा प्लीज हैव अ लुक. ये जो page fault rate है 10%, इसका 20%, इसका जो 20% है 0.2, पेज इज डर्टी. डर्टी पेज के लिए 10,000, 5,000 प्लस 5,000 नैनोसेकंड्स प्लस 0.8, 80% क्लीन पेज रहेगा या एम्प्टी फ्रेम रहे, एम्प्टी फ्रेम या क्लीन पेज, सो उसके लिए आपको लगेंगे 5,000 नैनोसेकंड्स. सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा. ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं. टीएलबी हिट, टीएलबी लुकअप टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम. टीएलबी मिस, देन टीएलबी लुकअप टाइम प्लस पेज टेबल एक्सेस टाइम फॉर हिट और मिस. इसके बाद हिट रेशियो, पेज हिट रेशियो इनटू 100. पेज मिस रेशियो पर यू बेसिकली हैव 0.2 into 10,000. दिस सर्विस टाइम, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर dirty page, for clean page. That's it, very straightforward. So boys and girls, I'm very sure if you simplify this equation, this will come to 154.5 nanoseconds. If you simplify, so you can round it to 155 nanoseconds. The range was given as 154 to 155. 154 to 155 was a given range. So therefore, the answer for this is 155 nanoseconds. Okay. So this is the answer. So it is interesting question. Got it? Chalo, next question.
Come on, tell me the answer for this. This is also interesting and important question. Come on, Vanjdham Echap, Tulika Datta, Nishu Kumar, please work out and tell me the answer for this. Come on, boys and girls, what is the answer? Assume that in a certain computer, the virtual addresses are 64 bits and the physical addresses are 48 bits long. The memory is word addressable, the page size is 8 KB. Please see here. The page size is 8 KB and the word size is 4 bytes. Word size. So every page, so that means यहाँ पर आप देखिएगा every page, ये page will have how many words? Page size is equal to 8 KB. Word size is equal to 4 bytes. So therefore one page will have how many words? 2K words. 2K words. Each word may contain instructions or data. Each word may consist of instruction or data. ठीक है. The TLB in the address translation path has 128 valid entries. Imagine these your TLB, this TLB. This TLB has 128 entries, valid entries. So that means they will be pointing to valid pages. So this one entry will point to one page. Another entry will point to another page. So 128 entries will point to 128 pages. Each page can hold 2K entries, 2K. Each page can hold 2K words, 2K addresses. So 2K, 2K, 2K. 2K addresses, one word correspond to one address. One word correspond to one address. So 2K, 2K. So how many entries I have? 128. So therefore total number of addresses जो आपको possible होंगे 128 into 2K addresses, which is 256 into 2 power 10. 2 power 10 addresses. So therefore, as you said, the correct answer is option D. The correct answer is option D. Right? So detailed explanation for this. Chaliye, next. Any doubt, any question you can ask. Come on, tell me, this is a reasoning question hai, 2 marks. Reasoning question for 2 marks.
Come on, simple question, boys and girls. Very simple question. Belady's anomaly is that the page fault rate may increase as the number of frames allocated increases. Random page replacement algorithm may suffer from Belady's anomaly. True or false? हाँ बिल्कुल, random may degenerate to work like FIFO, so therefore it may suffer from Belady's anomaly. This is true. LRU page replacement algorithm does not suffer from Belady's anomaly. It suffers, he's saying, so it does not suffer. That is false. So therefore S1 is true, S2 is false. The correct option, as you said very clearly, B is correct. वंश धामेचा, देखिएगा धामेचा, प्लीज टेल मी हियर, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन पेज इज ऑफ साइज 4 KB. वंश धामेचा, प्लीज हैव अ लुक. वन पेज इज ऑफ साइज 4 KB, सॉरी 8 KB. पेज साइज इज 8 KB. वर्ड साइज इज हाउ मच? 4 बाइट्स. सो एक पेज में कितने वर्ड्स रहेंगे? वन पेज विल हैव 2K वर्ड्स. वन पेज विल हैव 2K वर्ड्स. वन वर्ड correspond to one address. Each word, because each word may contain instruction or data, so it will be associated with some address, virtual address. So one page can give accessibility to how many addresses? 2K addresses. One page can give me accessibility to 2K addresses. अब पेज, अब TLB में क्या होगा? TLB will contain page number, frame number, right? So how many valid entries I have in the TLB? 128. Vanjamecha, 128. Each one points to one page which will give me 2K accesses, 2K addresses. Each entry will give me access to one page with 2K addresses. समझ रहे हो? तो one entry will give me 2K addresses. कितने entries है यहाँ पर? 128. So number of addresses कितने accessible होंगे? 128 into 2K, which is 256 into 2 power 10. Is it okay now? वंश धामेचा, क्लियर है? One entry of the TLB will give you accessibility to one page. Each page will give you access to 1K addresses. Sorry, 2K addresses. So that's the answer. Very good. चलिए next question. Give me the answer for this. ये simple question है. मैं चाहूंगा कि आप वर्कआउट करो प्लीज. Please work out these interesting and important questions, boys and girls, related to page faults. The difference in the number of page fault between the last in first out page replacement policy and the optimal page replacement policy is how much? The difference in the number of page faults with last in first out, opposite of FIFO, last in first out, and the optimal replacement policy is how much? Yes, 𝐿𝑦 correct है आपकी बात. Question has more information than required. Come on, anybody, any answer? As a hint, what I suggest is, आप इसे hint के तौर पे ले सकते हो. You can work out this question. You can work out this question based on less number of references. Less number of references. Like for example, you reduce it to half. A1, A2, so on up to A10. Then again repeating A1, A2, so on A10. A10. And instead of 10 physical frames, you say 5 physical frames. You work out for 5 frames. You can work out for 5 frames and then correlate the answer. आप correlate कर सकते हो.
ठीक है. So how many pitfall will occur with first last in first out, last in first out. So I will have references A1, A2, A3, A4, A5. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट. प्लीज ऑब्जर्व, लोकेश यादव, प्लीज ऑब्जर्व, प्लीज ऑब्जर्व. यस. तो A5. फिर उसके बाद A6, A7 will all replace with the last reference, with the last reference. So A6 to A10, A6 to A10, right? So A10, all will cause 10 page faults. All will cause 10 page faults with last in first out replacement policy, with a replacement policy. Now after that, what is going to happen? A1, A2, A3, A4 will not cause page fault. They are available in the main memory. They are available in the main memory. So what is going to happen after that? A5, A6, A7, A5, A6, A7 will be replacing A10, and the subsequent references. So A5 to A10 will cause page faults. A5 to A10 will cause page faults. A5, A6, A7, A8, A9, A10. That is 6 page faults, 16. So this will cause 16 page faults with last in first out 5 frames, with 5 frames. Now for the same reference string, if you work out with optimal replacement policy, what is going to happen? Let us see. Let us see with optimal replacement policy. Five frames. So as usual, first I will say A1, A2, A3, A4, A5, right? 5 page faults. Then after that A6, अब देखिएगा A6, A1, A2, A3, A4 will be referred. A5 will be referred at the end. A5 will be referred with the end. So along with A5 we are going to remove A6, and then finally A7. A7 means again A1, A2, A3, A4 will be referred. A7, A8 up to 8, A9, A10. A10 तक यहाँ पे जाएगा, A10 तक. मतलब this will also cause so far 10 page faults up to here, up to 10 page faults. Is it not? So now A10 is here, A10 is here. After that A1, A2, A3, A4 will not cause page fault. A1, A2, A3, A4 will not cause page fault. A5 will cause, A5, right? So A10 will be referred, remaining will not be referred. So therefore you can remove any one of them. A5 will cause up to A9, A5, A6, A7, A8, A9. 5 page faults will happen. A10 is present in memory, will not cause the page fault. So therefore 10 plus 5, 15. So with optimal replacement, 15 page faults. Last in first out, 16 page faults. Boys and girls, difference is 1. Nishu Kumar, you didn't get my point. Nishu Kumar, I have reduced the value from A1 to A10 and reduced the value from 10 to 5. Nishu Kumar, are you getting your point? So if you work out now similarly for 20 and 20 here, you can get the same difference. The difference will be 31 and 30 if you take 20 references. The difference will be 31 and 30 with 10 references. So therefore the answer for this will be 1. Got it? The answer will be for this question 1. Chalo, next question. Come on, tell me the answer for this. It's simple hai. Please work out, boys and girls. Yes, Vansh Dhamecha, that is right. Come on, tell me the answer for this. ये direct question है. Come on, what is the answer for this?
Consider a computer system with 40-bit virtual addressing and page size of 16 kilobytes. If we are using one level page table and each page table entry is 48 bits, then the size of per process page table is how much? Direct question, very direct question, 1 mark होना चाहिए ये. Actually दिया गया है 2 marks. Question is very straightforward. Okay. The formula for page table size, you can say number of pages multiplied by entry size in bytes. Number of pages are how many? 2 power 40 divided by page size, 2 power 16 kilobytes. So therefore 2 power 14 multiplied by 6 bytes. 48 bits is 6 bytes. So therefore this is 2 power 24 into 6 bytes. 2 power 26, sorry. 2 power 26. ठीक है? So therefore this is 64 into 6 megabytes. 64 into 6, 384 megabytes. So in terms of megabytes, boys and girls, the answer numerical is 384. The answer in numerical is 384. Very straightforward question. बहुत straightforward question है. 384 is the correct answer. चलिए next question. Come on, tell me, direct question है, simple question है. Boys and girls, is very simple. In which one of the following page replacement algorithm it is possible for the page fault rate to increase even when the number of allocated frames increases? अगर number of frames increase होने पर, direct question, Belady's anomaly, तो first in first out है, right? और second chance यहाँ पे दिया नहीं गया है. So as you said, option D is correct. Very good, very good. Simple question है, बहुत simple. चलिए next question. MSQ है, boys and girls. MSQ, be careful. Come on, come on. मिस्टर चाचा बोलिएगा. हाँ बिल्कुल सही है. अंकित इंडिया. यस, बेलाडीज एनोमली है. इसका आंसर बताइए. MSQ है इसका आंसर. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. In the context of operating system, which of the following statements is or are correct with respect to paging? Paging के लिहाज से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे? पेजिंग हेल्प सॉल्व द इशू ऑफ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. वेरी करेक्ट. बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पेजिंग है टू ओवरकम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. क्या इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा? इट हैज नो इंपैक्ट ऑन इंटरनल फ्रैगमेंटेशन. नो, इट विल हैव. सो देयरफॉर दिस इज इनकरेक्ट. मल्टी लेवल पेजिंग इज नेसेसरी टू सपोर्ट पेजेस. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मल्टी लेवल पेजिंग में वेरिइंग साइज पेजेस होंगे, जरूरी नहीं है. ठीक है. पेजिंग अकर्स मेमोरी ओवर्स. हाँ, पेज टेबल साइज ओवरहेड. सो देयरफॉर एज पीपल हैव सेड, Zoravar, Nishu Kumar, right? AD is correct. Time complexity of bubble sort without any optimization is order of n square. सही बात है, करेक्ट है. उगांदा. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये देखेंगे कौन बताएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Please work out and tell. Read the question thoroughly. हाँ, पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा ना. हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कर रहा है. हेल्प सॉल्व, LYK-KMT. इट हेल्प्स पेजिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेजिंग इज टू ओवरकम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. बिल्कुल सही बात है,
कमान इसका आंसर बताइएगा प्लीज। चंद्रकांत पांडे, जरूर पॉसिबल है, थोड़ा रिवीजन इंप्रूव कीजिएगा, रिवीजन इंप्रूव कीजिएगा, और पीवाईक्यूज कि जैसे कि सीरीज जैसा है ऐसे सीरीज आप पीवाईक्यू के पार्टिसिपेट कीजिए, इंप्रूव द रिवीजन, एंड आई एम वेरी श्योर यू कैन इंप्रूव, यू कैन स्केल अप योर मार्क्स, जरूर बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तो एनीबडी एनी आंसर फॉर दिस? 36, निशु कुमार हैज सेड 36। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। A computer system implements an 8 kilobyte page size is 8 KB, so यहाँ पे लिख लेंगे page size is equal to 8 KB, 32-bit physical address space, so physical address क्या, physical address is 32 bits, page table entry contains, page table entry का architecture दिया गया है, यहाँ पर बनाएंगे page table entry, तो this is the page table entry structure, mandatory information is frame number, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रेम नंबर है, सो इट से इट कंटेन वैलिड बिट, डर्टी बिट डी, 3 परमिशन बिट 3 बिट्स, एंड द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब इफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द एंट्री ऑफ द पेज टेबल ऑफ द प्रोसेस इज 24 मेगाबाइट्स, ओके, 24 मेगाबाइट्स पेज टेबल साइज इज इक्वल टू 24 मेगाबाइट्स। The length of the virtual address supported by this system is, तो virtual address आपको पता होने के लिए I need 2 things. Virtual address, it depends on page number and offset. It depends on page number and offset, right? So page number depends on number of pages. So number of pages आप page table size से निकाल सकते हो. Number of pages is equal to the formula of page table size is equal to n into is equal to 24 MB. So you can find the value of n if I know the value of e, 24 MB divided by entry size. तो entry size के लिए आपको यहाँ पे डिटरमिन करना होगा, ये 1 बिट है, ये 1 बिट है, इसको आप क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है, ये 3 बिट्स है, तो फ्रेम नंबर आपने डिटरमिन करना है। नंबर ऑफ फ्रेम्स m डैश इज इक्वल टू 2 पावर 32 डिवाइडेड बाई 2 पावर 13 इज इक्वल टू 2 पावर 19। तो बच्चों फ्रेम नंबर है 19 बिट्स, तो आपकी एंट्री साइज कितनी बनी, राइट, 19 20 21 प्लस 3 24 बिट्स, एंट्री साइज इज 24 बिट्स मतलब 3 बाइट्स, एंट्री साइज इक्वल टू 24 बिट्स मींस 3 बाइट्स, ठीक है। हाँ, तो यहां पे देखिएगा डिवाइडेड बाय 3 बाइट्स, नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 8m, नंबर ऑफ पेजेस आर 8m, मतलब पेज नंबर इज हाउ मेनी बिट्स, 23 बिट्स, 23 बिट्स, तो दिस इज 23 बिट्स, एंड पेज साइज इज 8 KB, मतलब दिस 13 बिट्स, ऑफसेट इज 13 बिट डी 13, सो टोटल साइज बनेगा 36। The size of the virtual address as a numerical answer type is 36 bits. Very correct, निशु कुमार, अंकित इंडिया, वेरी गुड। हाँ निशु, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी लाइक करता हूँ ये क्वेश्चन को, दैट्स व्हाई आई से स्टार क्वेश्चन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड गिमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कम ऑन, दिस यू हैव टू वर्क आउट, मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, आपने वर्कआउट करना है, सिंपल डायरेक्ट प्रॉब्लम है, डायरेक्ट प्रॉब्लम है तो आप वर्कआउट करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज फीफो एंड एलआरयू, फीफो एंड एलआरयू में डिफरेंस बताइएगा, फीफो एंड एलआरयू का डिफरेंस बताइएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, KMT LYK KMT देखिएगा, I mean you should know the formulas, you should know the concepts। अगर formulas और concepts पता नहीं हो तो आपको समझ नहीं आएगा। ये
फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है तो ये समझ नहीं आएगा। देखिएगा, वर्चुअल एड्रेस फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, पेज टेबल एंट्री स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। फिर भी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, सुनिएगा। पेज साइज इज गिवन टू बी 8 किलोबाइट्स, फिजिकल एड्रेस इज गिवन टू बी 32 बाइट्स, पेज टेबल एंट्री का स्ट्रक्चर दिया गया है, वैलिड बिट है, डर्टी बिट है, परमिशन बिट्स है, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रेम नंबर होगा। फ्रेम नंबर कैसे निकालोगे आप? फिजिकल एड्रेस पेज डिवाइडेड बाई पेज साइज, ये बनेगा 2/19, मतलब फ्रेम नंबर इज 19 बिट्स। तो यहां से आपको पता चला पेज टेबल एंट्री साइज है 24 बिट्स, मतलब 3 बाइट्स, 3 बाइट्स। तो अब देखिएगा, पेज टेबल साइज का फॉर्मूला है n इंटू ई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 24 MB पेज टेबल साइज है, तो n की वैल्यू क्या बनेगी? 24 MB डिवाइडेड बाई एंट्री साइज जो अभी हमने डिटरमिन किया 3 बाइट्स, ये बनेगा 8 है, मतलब पेज नंबर के 23 बिट्स है। ठीक है, पेज नंबर के 23 बिट्स है। पेज साइज 8 किलोबाइट्स है, ऑफसेट क्या बनेगा? 13 बिट्स, 2/13 इज 8 KB। तो देयरफॉर वर्चुअल एड्रेस फॉर्मेट क्या है? पेज नंबर एंड ऑफसेट। पेज नंबर कितना है? 23, ऑफसेट 13, 23 प्लस 13 36, 𝐿�YKKMT, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिएगा इसका आंसर। चंद्रकांत पांडे, वंशदा मेचा, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द आंसर? वर्कआउट कीजिएगा। Yes, that is correct. Very good. So, boys and girls, the answer for this question, as you rightly said, is both incur same. I hope, if I am not wrong, you might have got number of page faults. Number of page faults with both is 9. The number of page faults both are 9. Very good, Nishu Kumar. That's correct. So the correct answer is both incur same number of page faults. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, प्रीवियस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा प्लीज। यस अंकित इंडिया, दैट्स करेक्ट। इसका आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का। Virtual address is equal to 32 bits. Page size is equal to 4 KB. Entry size is equal to 4 bytes. He is asking page table size. Number of entries multiplied by entry size in bytes. Number of entries is equal to 2/32 divided by page size 2/12. Entry size is equal to 4 bytes. Is equal to 2/20 into 4 bytes, which is 4 megabytes. So answer is 4. बिल्कुल सही है, आंसर इज 4। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये एक होमवर्क की तरह करेंगे।
you have to work out for optimal, LRU and FIFO, right? You have to work out among these three and do it. So we have done similar questions a lot, many. Work out as homework practice. Okay, work out this as homework practice. We have done similar questions, so many, on page replacement. So you can try again on your own. चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाऊंगा. हाँ, ये वर्कआउट करेंगे. कम ऑन, वर्कआउट दिस बॉयज एंड गर्ल्स. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. आई एम वेरी श्योर यू कैन वर्कआउट नाउ. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप वर्कआउट कर सकते हो. Yes, Nishu Kumar, that's correct. 30 nanoseconds सही है. Other people also please verify. Ankit India, you got reasonably good marks. Don't worry. Just keep on practicing. थोड़ा practicing और बढ़ा दीजिएगा. Revision before going for next mock test, revision कीजिएगा फिर एक बार, and then you go for it. Uganda AI, what happened? क्या हुआ बेटा? Uganda AI, tell me. You are showing a very curious image emoji. हाँ, ज्यादा रिवीजन. वरुण त्यागी, do more revision and solve more PYQs. So boys and girls, here page fault service time is equal to 10 millisecond. Average memory access time 20 nanosecond. One page fault is generated every 10 power 6 memory accesses. So therefore, what is the effective access time? So effective memory access time is equal to page fault rate 1 by 10 power 6 into page fault service time 10 millisecond, 10 into 10 power minus 3 seconds plus no page fault rate, page hit ratio 1 minus 1 by 10 power 6, okay, into memory access time. Memory access time है 20 nanoseconds. So 20 into 10 power minus 9 seconds. So this is nothing but 10 into 10 power minus 9 seconds plus these almost, because these almost 1. So 1 into 20 into 10 power minus 9 seconds. So therefore, this is nothing but 20 plus 10, 30 nanoseconds. 30 nanoseconds. Very direct question. So option is B. Option is B. Uganda AI, please see the formulas. एक बार formulas अच्छे तरीके से देख लीजिएगा. Substitution, direct substitution problem है ये. Uganda AI, direct substitution formulas है ये. 30 nanoseconds. तो formula क्या है? The formula is effective memory access time is equal to P into S plus 1 minus P into M, where P is the page fault rate, S is the service time, M is the memory access time. M is the memory access time. Okay, so that based on that formula we have done. And next question again, tell me the answer for this. So again I re-emphasize, particularly for those who have not studied the subject, और अगर आप PYQ series में आ जाओगे, then you start blaming me. सर फास्ट जा रहे हो, कुछ बराबर नहीं समझा रहे हो, हाइप है, ऐसा है वैसा है बोलेंगे आप. प्लीज वर्कआउट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन वर्कआउट, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से ग्रास रूट लेवल से समझाना नहीं है. आई एम अज्यूमिंग दैट फर्मली यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट्स एंड कम.
ठीक है, then only this will be meaningful and useful, otherwise it will not be of any use to you and you will be forced to make some uh, irrational comments, and that is not at all correct. Come on, boys and girls, read the question thoroughly and tell me the answer. Four-page frames with no pages loaded to begin with. The system first accesses 100 distinct pages in some order and then accesses the same 100 pages but now in reverse order. How many page faults will occur? 0 to 100 रहेंगे, right? Or maybe 1 to 100. 100 page faults. फिर उसके बाद 100 in reverse. So 100, 99, 98, 96 will not cause page fault. 4 page faults नहीं होंगे. So 96 will cause page fault. So total page faults will be naturally 100 plus 96 is equal to 196. Very straightforward question. Option A is correct. Very straightforward. Option A is correct. Yes. चलिए next question, important star question. I will give you 2 minutes of time for you to understand the question and work out, make a try. Interesting important question, boys and girls. 2023 का important question है. देखेंगे कितने बच्चे वर्कआउट करते हैं. I will give you 2 minutes of time. The question based on thrashing. This is a question based on thrashing concept.
Come on, anyone, what is the answer for this? Nishu Kumar, Uganda, S. Kalu, 8811, Manish. What is the answer for this? Chलिए, I'm starting it. Consider the following two-dimensional matrix in the C programming language is stored in row major order. Our row major order में matrix stored है, and the size of the matrix is 128 by 128. Right? Demand paging is used for allocating memory, and each physical frame size holds 512 elements. So देखिएगा, page size is 512 elements. Page size is 512. Physical page frame or page size is 512. LRU algorithm is used by the operating system, and number of frames allocated are 30. Okay, and the code executed by ये ठीक है. Number of page faults generated during the execution. तो सबसे पहले जो हमें determine करना है, how many pages? Number of pages my matrix fit in. Number of pages is equal to size of the matrix 128 by 128 divided by page size 512. ये बनेगा 2 power 14 divided by 2 power 9, 2 power 5, 32 pages. First point, my program need 32 pages. ये matrix need 32 pages. ठीक है? And in the row major order we are storing in these 32 pages this matrix. So मतलब एक पेज में कितने रोज आएंगे? 4 रोज आएंगे. 128 plus 128 plus 128 plus 128 is basically 512. तो एक पेज में 512 रोज आएंगे. 512 rows, 0 to 3 in the first page, 4 to 7 in the next page, like that. This is the first point. ठीक है. Next, यहां पर अब आप कोड देखोगे, when you are looking at the code, int I equal to 0, I less than 127, j equal to 0. तो ये जो मैट्रिक्स की ऑर्डर है रो वाइज है, लेकिन एक्सेस आपका जो हो रहा है d of ji, that means boys and girls please observe this access is column major order access. column major order में आप एक्सेस कर रहे हो, तो मतलब d of 0 0 फर्स्ट, उसके बाद d of 1 0, d of 2 0, d of 3 0, इस तरीके से. ठीक है, अप टू 128 रोज एक्सेस करोगे आप, मतलब कॉलम मेजर ऑर्डर. सो हाउ मेनी पेजेस, हाउ मेनी फ्रेम्स आर अलोकेटेड टू द प्रोसेस? द नंबर ऑफ फ्रेम्स अलोकेटेड टू द प्रोसेस आर 30 frames. So first page fall will cause and you bring P0 first page P0. तो उसमें जो रोज रहेंगे 0 1 2 3. So among them you will initialize the first 4 elements 0 0, then 1 0, and then 2 0, then 3 0. So per page fault 4 references will get initialized. मतलब total number of references कितने? 128. Total number of access कितने? 128. So that has to be divided by 4 for giving the number of page faults. So per value of I, so let me write per value of I, number of page faults happening will be 128 divided by 4. फिर से एक बार कह रहा हूं, फर्स्ट पेज अगर आप पेज फॉल्ट 0 0 के साथ लाओगे, उसके साथ 4 रोज आएंगे 0 0 1 0 2 0 3 0, ये रोज 0 0 0 लाइक दैट 120 एलिमेंट्स 128. लेकिन सारे 128 एलिमेंट्स आप इनिशियलाइज नहीं करोगे, यू विल इनिशियलाइज ओनली वन एलिमेंट, कॉलम मेजर ऑर्डर, राइट? So this is 0 0 first access. Next 0 1 0 2 0 3 will not be doing anything. Next row 1 0, next row 2 0, next row 3 0. So this set of 4 pages, this set of 4 rows will be in P0. तो ये 4 rows लाने के बाद you will initialize only 4 elements. with one page fault. So 128 divided by 4 will be the number of page faults for all the values of j. ये जो लूप के लिए total number of page faults will be 128 by 4. मतलब this is 32. So per value of I, 32 page faults are happening, boys and girls. Per value of I, 32 page faults are happening within the second loop. Per value of I. फिर आप next value of I generate करोगे, I is equal to 1. तो क्या होगा? 0 1, that will be present in the first page. लेकिन LRU replacement से आप P0 P1 हटा दोगे, क्योंकि number of frames are 30, number of pages are 32. Number of frames are 30, number of pages are 32.
So that will give you next value of I will generate another 32 page faults. Next value of I will generate another 32 page faults. So that means each value of I will cause 32 page faults. So total page faults will be nothing but 32 into 128, which is 2 power 5 into 2 power 7, 2 power 12, 4 KB. ठीक है, तो ये है आपका आंसर 4096, 32 into 128. That is correct. So number of page faults are 32 into 128. 4096. This is for column major order. हाँ, अगर ये रो मेजर ऑर्डर होता then I would have only generated 32 page faults. अगर ये रो मेजर ऑर्डर होता this would have been dij. अगर ये dij होता तो number of page faults would have been only 32. Uganda, Manish Kumar, Nishu Kumar, please understand this. This star question, important question है ये. ठीक है, ठीक है. So therefore this is the approach for solving this question, boys and girls. So let's proceed to the next question now. हाँ, बताइए, फाइल सिस्टम का क्वेश्चन है नाउ. नाउ सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइल सिस्टम. प्लीज वर्क आउट एंड टेल. प्रेम महादिक, try to complete, try to watch those courses in crash mode. Try to watch those courses and complete those courses in crash mode. बॉयज एंड गर्ल्स, फाइल सिस्टम के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर फाइल सिस्टम क्वेश्चन. अगर आप फाइल सिस्टम के क्वेश्चंस में परफेक्शन हासिल करोगे, परफेक्शन बनाओगे, तो यू विल स्केल ओवर अदर्स. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज मास्टर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइल सिस्टम. प्लीज मास्टर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइल सिस्टम. बेटा, जिसका भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरी अपील है, महा रिवीजन क्रैश कोर्स से वो सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा. डोंट नेग्लेक्ट इट, डोंट लीव इट. संगनाक, डोंट लीव द सब्जेक्ट बेटा. आई वुड से गो फॉर क्रैश कोर्स. महादिक, गो फॉर क्रैश कोर्स और फिर महा रिवीजन दोनों भी अटेंड कर लो. देन इट विल हेल्प यू. एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू वर्क आउट. सो बॉयज एंड गर्ल, लेट अस रिव्यू दिस क्वेश्चन. वी हैव ए डिस्क, और उस डिस्क में लेट अस से वी हैव ए फैट. हियर, द फाइल एलोकेशन टेबल. दिस इज अ डिस्क. डिस्क की जो साइज है 100 into 10 power 3, 10 power 6 bytes. These are disk size. Okay. Data block size. The data block size is equal to 10 power 3 bytes. तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए? नंबर ऑफ ब्लॉक्स is equal to 100 into 10 power 6 divided by 10 power 3 is equal to 100 into 10 power 3. ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स है. ठीक है. द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल इज नथिंग बट डिस्क साइज माइनस फैट साइज. ये आपका फैट है, फाइल एलोकेशन टेबल. तो फैट साइज डिटरमिन करना है. नंबर फैट साइज का सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ ब्लॉक्स मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड ऑफ द फैट एंट्री. ओवरहेड ऑफ द फैट एंट्री कितना है? यहां पे दिया गया है 4 बाइट्स. तो ईच एंट्री इज ऑफ साइज 4 बाइट्स. तो टोटल फैट साइज क्या बनेगा? टोटल फैट साइज इज इक्वल टू 100 number of entries equal to 100 into 10 power 3 into 4 bytes. ये फैट साइज है इन बाइट्स. So this will be 4 into 10 power 5, which is equal to 0.4 into 10 power 6. So therefore यहां पर आप लिखोगे मैक्सिमम फाइल साइज is equal to disk size. डिस्क की साइज से 100 into 10 power 6 माइनस फैट साइज अगर आप निकाल दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको मैक्सिमम फाइल साइज आएगी 100 minus 0.4 बनेगा 99.6.
in terms of 10 power 6 bytes is 99.6. Nishu Kumar, that's correct. So therefore the correct answer for this is 99.6. Very simple question, 1 mark का क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे. बताइएगा आंसर इसका. इसका आंसर बताइए प्लीज. फिर से एक बार कह रहा हूं, फाइल सिस्टम के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है. फाइल सिस्टम के क्वेश्चंस में मास्टरी डेवलप कीजिएगा प्लीज. अटेन परफेक्शन, crystal clear conceptualization of file system questions. Generally many GATE aspirants leave the file system questions, boys and girls. अनिक मुखर्जी, कंपल्सरी लर्न करना है क्योंकि जनरली फाइल सिस्टम के 2 मार्क क्वेश्चंस आते हैं. अनिक मुखर्जी, जनरली यू विल गेट 2 मार्क क्वेश्चंस इन फाइल सिस्टम प्रॉब्लम्स. देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस. आई नोट का पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यू मे एक्सपेक्ट ए 2 मार्क क्वेश्चन ऑन यूनिक्स आई नोट स्ट्रक्चर. अनिक मुखर्जी कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज. मुखर्जी कंप्लीट कर लो. सो डिस्क ब्लॉक साइज 4 KB, डिस्क ब्लॉक एड्रेस 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स. तो मतलब एक ब्लॉक में 4 बाइट एड्रेसेस आप स्टोर करोगे. 4 किलोबाइट में डिस्क ब्लॉक में 4 बाइट के एड्रेसेस स्टोर करोगे तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितने आएंगे? नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस, नंबर ऑफ एंट्रीज एक ब्लॉक में कितने फिट होंगे? डिस्क ब्लॉक साइज 4 KB डिवाइडेड बाय 4 बाइट्स इज इक्वल टू 1K. एक ब्लॉक में 1K एंट्रीज, 1K डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस बैठेंगे. एक ब्लॉक में 1 किलो एड्रेसेस बैठेंगे. समझ रहे हो? दीज आर कॉन्सेप्ट्स. ये कैसे होगा? तो बिल्कुल फाउंडेशन से जाना पड़ेगा, जो मैं नहीं यहाँ पे जा सकता. आई कांट गो. आई बिलीव दैट यू शुड हैव द फाउंडेशंस. फाउंडेशन नहीं रहे तो फिर डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, और उसके लिए फिर आप मुझे ब्लेम करोगे. चलिए, तो मैक्सिमम पॉसिबल फाइल साइज क्या होगी? डायरेक्ट एड्रेसेस कितने हैं? 12 है. 12 इंटू 4 KB ब्लॉक साइज. सिंगल इनडायरेक्ट है, 1 सिंगल इनडायरेक्ट एंड 1 डबल इनडायरेक्ट. सिंगल इनडायरेक्ट से 1K एड्रेसेस आप एक्सेस कर सकते हो, 1K इंटू 4 KB. डबल इनडायरेक्ट से कितना एक्सेस कर सकते हो? 1K इंटू 1K इंटू 4 KB. तो लार्जेस्ट साइज ये है, ये बनेगा 4 GB. किलो इज मेगा, गीगा 4 GB. दिस इज ओनली मेगा, 4 मेगा. दिस इज 48. सो दिस इज नेग्लिजेंट फैक्टर. ये जो फैक्टर है, ओके, ये जो फैक्टर है नेग्लिजिबल है. तो ऑलमोस्ट कितना है आपका? 4 GB. और पूछ रहा है आंसर GB में, तो ये बनेगा 4. ये बनेगा 4. निशु कुमार, चेक इट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4. वंश धामेचा, दैट्स करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. चलिए स्टार क्वेश्चन है, देखेंगे कौन बताएगा आंसर. ये स्टार क्वेश्चन. आई विल गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम. Come on, work out, make a try. Important question है 2025 का recent paper. हाँ, Uganda, you can ignore it. Smaller factors you can ignore. Come on. These are important question, boys and girls. Read and make a try. Read the question, make a try, sincere try. Lucy Star, if you are in 3rd year ना, you should give a sincere try for writing. अगर आप 3rd year में get crack कर लोगे, then in final year you can focus on competitive programming, coding,
टेक्नोलॉजीज, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो, इंटर्नशिप पे फोकस कर सकते हो। तो इसीलिए थर्ड ईयर के बच्चे गेट लिख के क्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है? प्रेम महादिक, कौन सा सब्जेक्ट टफ लग रहा है बेटा आपको? वंश धामेचा, वेरी गुड, यू कैन क्रैक इट, आई एम श्योर। वंश, थोड़ा आप एफर्ट करोगे, एफर्ट लगाओगे तो जरूर क्रैक कर पाओगे। डिजिटल लॉजिक कोई टफ नहीं है, डिजिटल लॉजिक इज वन ऑफ द वेरी सिंपल सब्जेक्ट। अनिक मुखर्जी, यू कैन फोकस ऑन एलोकेशन मेथड्स एंड फ्री स्पेस मैनेजमेंट। अनिक मुखर्जी, फाइल सिस्टम में फाइल एलोकेशन मेथड्स और डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट पर फोकस बनाए रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से टॉपिक के हार्ड लग रहे हो पीवाईक्यू? महादिक 5963, कौन से टॉपिक पर पीवाईक्यू टफ लग रहे हो? ठीक है, दैट इज ओके। अनिकेत, जितना आप पढ़े हो उतना ही फोकस कर लो, वो भी अच्छी चीज है, वो भी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अनिक मुखर्जी, विल टॉक अबाउट एल्गोरिथम्स इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एल्गोरिथम्स। अनिक मुखर्जी, कॉम्बिनेटोरियल और सीक्वेंशियल सर्किट बहुत सिंपल है, कॉम्बिनेटोरियल्स और सीक्वेंशियल सर्किट बहुत सिंपल है। चंदन झा के वीडियोस आप वॉच कर लो, समझ में आ जाएगा। चंदन झा के वीडियोस वॉच कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पनीग्राही, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द सब्जेक्ट्स, वेरी गुड। चलिए हम स्टार्ट करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिस्क ऑफ साइज 512 मेगाबाइट्स इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ साइज। डिस्क ब्लॉक साइज जो है वो है 64 किलोबाइट्स, ठीक है। फाइल is stored on disk using linked allocation. In linked allocation, each data block reserve 4 bytes for pointer. मतलब linked allocation में जो पॉइंटर होगा ये 4 बाइट्स का पॉइंटर है, 4 बाइट्स इन द ब्लॉक, ठीक है। The link part of the last data block contain null which is also 4 byte, ठीक है। फाइल साइज कितनी है? 1 मेगाबाइट्स, फाइल साइज है 1 मेगाबाइट्स। तो 1 मेगाबाइट के लिए कितने ब्लॉक्स लगेंगे? कितने ब्लॉक्स लगेंगे? डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज 64 किलोबाइट। सो बॉयज एंड गर्ल, ये है 2 पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 पावर 16, ठीक है। देखिएगा 16, तो ये बना 2 पावर 14, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 ब्लॉक्स, 16 ब्लॉक्स, ठीक है। 16 ब्लॉक्स लगेंगे फाइल को स्टोर करने के लिए, लेकिन सारे 16 ब्लॉक्स में 64 किलोबाइट डेटा नहीं रहेगा। सारे 16 ब्लॉक्स में 64 किलोबाइट डेटा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 बाइट पॉइंटर भी है, 4 बाइट। तो ये 4 बाइट पॉइंटर अगर आप निकालोगे तो कितने बाइट्स ऑफ डेटा विल बी रिस्टोर्ड इन 17 ब्लॉक्स? और टोटल ब्लॉक्स नीडेड विल बी 16 प्लस 1 एक्स्ट्रा फॉर स्टोरिंग दिस 4 बाइट्स का डेटा, जो पॉइंटर के फॉर्म में जो जा रहा है वो डेटा आपको लास्ट ब्लॉक में स्टोर करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इज इट नॉट? लास्ट ब्लॉक में जाएगा एक्स्ट्रा, तो कितने होंगे? लास्ट ब्लॉक 17 में जाएगा। इसमें कितने बाइट्स रखेंगे आप? 16 इंटू 4,
ये 16 ब्लॉक्स का 4 बाइट 64, तो 64 बाइट्स, ठीक है, 64 बाइट्स, समझ रहे हो आप? 64 बाइट 16 into 4 64 बाइट्स ऑफ डेटा विल बी देयर इन द 17th ब्लॉक। 17th ब्लॉक में 64 बाइट्स डेटा स्टोर करोगे। यहां पे मैं बताऊंगा डायग्राम। ये लास्ट ब्लॉक है आपका, 17th ब्लॉक है, ठीक है, ये 17th ब्लॉक है, ये 17th ब्लॉक है, ये 17th ब्लॉक में 64 बाइट्स आप लिख रहे हो, प्लस एक नल पॉइंटर भी है, इसका 4 बाइट्स है, ठीक है। टोटल ब्लॉक साइज है टोटल ब्लॉक साइज है 64 किलोबाइट्स, 64 किलोबाइट्स का ब्लॉक है। इसमें से 68 बाइट्स विल बी यूजफुल, विल बी स्टोर्ड, 64 बाइट्स ऑफ डेटा प्लस 4 बाइट, because 4 bytes also basically the null pointer, मतलब 68 bytes. So 68 bytes are useful, are used, 68 bytes in the last block, 17th block are used as data. In the last block, 17th block, 16 blocks तो full है, फिर last block में 17 block में 68 bytes, 64 bytes के 4 bytes, 16 blocks के 4 bytes, 64 bytes plus 4 bytes, null pointer, 68 bytes. तो last block में, right, last block में 68 बाइट्स यूजफुल है आउट ऑफ टोटल ब्लॉक साइज। टोटल ब्लॉक साइज कितना है? 64 किलोबाइट्स। तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या हुआ? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन इज इक्वल टू 64 किलोबाइट, 64 इंटू 1024 माइनस 68 बाइट्स, माइनस 68 बाइट्स, ये आपका आंसर है। तो 64 इंटू 1024 एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। 64 into 1024, 65,536, 65,536 minus 68, minus 68, 65,468, 65,468, ये है आपका आंसर। 65,468 बाइट्स इज द आंसर बॉयज एंड गर्ल्स, 65,468 इज द आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्चुअली रिक्वायर्ड 16, लेकिन ये 16 ब्लॉक्स में सारा डेटा नहीं रहेगा, 4 बाइट का पॉइंटर चले जाएगा। तो दैट 4 बाइट्स गेट एक्यूमुलेटेड एंड टू बी स्टोर्ड इन द लास्ट 17th एडिशनल ब्लॉक। लेकिन एडिशनल ब्लॉक में ओनली 16 ब्लॉक्स का 4 बाइट पॉइंटर का अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होगा। तो 16 इंटू 4 बाइट स्टोर होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 16 इंटू 4 कितना हुआ? 64 प्लस नल पॉइंटर के 4 बाइट 68, मतलब ब्लॉक साइज है 64 केबी। 64 केबी में से 8 बाइट्स सब्ट्रैक्ट करना है। Yes, Uganda, I hope you got it now. अगर आप समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। So therefore 65,468 is answer. 65,468. 65,468 is the answer for this. So this approach is more simple. तो चलिए बच्चों, I hope you enjoyed this question. This is a very interesting question. One of the question I like in file system very much. Nishu Kumar, you didn't get the point. देखिएगा, ये अगर आपका फर्स्ट ब्लॉक है निशु कुमार, देखिएगा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड 16 है, टोटल ब्लॉक 16 है, लेकिन क्या हर ब्लॉक में टोटल 64 किलोबाइट का डेटा स्टोर कर रहे हो निशु? आर यू गोइंग टू स्टोर फुल 64 किलोबाइट्स ऑफ डेटा इन द फर्स्ट ब्लॉक? नो। क्यों? क्योंकि 4 बाइट्स पॉइंटर है। तो 64 किलोबाइट्स माइनस 4 बाइट्स ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड इन द फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक में भी वैसे ही 64 केबी माइनस 4 बाइट्स विल बी स्टोर्ड इन सेकंड ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक में भी उसी तरह 16 ब्लॉक्स में इसी तरह आप स्टोर करते जाओगे, 64 केबी माइनस 4 बाइट्स। तो टोटल कितने बाइट सब्ट्रैक्ट हो गए? 64 टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 16 इंटू 4 बाइट्स। तो 64 बाइट्स ऑफ डेटा कैनॉट बी स्टोर्ड, 64 बाइट्स ऑफ द फाइल डेटा कैनॉट बी स्टोर्ड इन दीस 16 ब्लॉक्स। तो वो आपको एक एडिशनल ब्लॉक लेना पड़ेगा, राइट? एक 17 ब्लॉक लगेगा, समझ रहे हो बात? तो 17 ब्लॉक में यू विल स्टोर 64 बाइट्स ऑफ डेटा ऑफ द फाइल, 64 बाइट्स ऑफ डेटा 17th लास्ट ब्लॉक में आएगा, एडिशनल ब्लॉक में आएगा। तो प्लस उसके अलावा फिर यू हैव 4 बाइट नल पॉइंटर इन दी लास्ट 17 ब्लॉक, तो 68 बाइट्स आर स्टोर्ड। तो 64 किलोबाइट्स में 68 बाइट्स आर स्टोर्ड एंड द रिमेनिंग इज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। रिमेनिंग इज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, वही किया हम यहां पर, देखिएगा। दिस इज द टोटल ब्लॉक साइज माइनस the data used. So therefore 65,536 is the value of 64 kilobytes.
-68 bytes. So this will give you this answer. Very simple. चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. I hope those who have understood will really enjoy. Otherwise, those who have not understood will have a struggle. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. MSQ है और MCQ है. Very good, Aganda. I said, I mean, this question I have not solved in my regular classes also. My PYQ का वही advantage है. I would advise that you should attend this PYQ series and get a benefit out of it, reap benefit out of it. Just Sanjoy Maiti 6446, tell me. चलिए, which one of the following statements is false? TLB performs an associative search in parallel on all its valid entries using page numbers of incoming virtual addresses. This is true. If the virtual address of a word given by CPU as a TLB hit, अगर TLB hit हो, but the subsequent search for the word results in a cache miss, तो मतलब वो main memory में तो रहेगा, always be present in main memory. True. The memory access time using given inverted page table is always same for always same नहीं रहेगा, because it will be different. TLB inverted page table size search is search by content, not search by access. So therefore this is false. In a system that uses, क्योंकि will be same कह रहा है, it will not be same. In a system that uses hash page tables, if two distinct virtual addresses v1 and v2 map to the same value while hashing, then the memory access time of these addresses will not be same. Yes, because we are generally using chaining, तो chain में आपका time same नहीं रहेगा, will not be same कह रहा है. That's why it is true. That's why it is true, boys and girls. Uganda, please be careful. So therefore, the correct answer is only C. The correct answer is only C. MCQ है. The correct answer is C. So that's why the answer. This is the concept. चलो next question. Read it. This is also star question, boys and girls. ये भी star question है. From I think 2022 recent paper का है. Please try this, everyone. Allocation method के ऊपर question है, काफी important है. Once Dhamecha, I think without giving some break, we can continue and finish, because hardly there are another 2-3 questions. Because I have after this file system के almost हो गए हैं question. We have next basically disk scheduling के 2-4 question हैं, वो solve करके complete कर लेंगे. Once Dhamecha, we'll complete and finish. Hardly another 3-4 questions are there on disk management या disk scheduling पर to complete. Another 15 minutes we should be able to complete. Anik Mukherjee, that question maybe sometime later I will take up, not now, because I need to get that question. Page coloring का जो question है, you should be familiar with VPT concept of paging of cache memory. 𝐂𝐤𝐿𝐴 correct बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपका. So सुनिएगा बच्चे, consider two file systems A and B that uses contiguous allocation and linked allocation. Contiguous and linked, okay. A file of size 100 blocks is already stored in A and also in B. Now consider inserting a new block in the middle of the file between 50 and 51st block, whose data is already available in main memory. Assume that there are enough frames, enough free blocks at the end of the file,
and that the file control blocks are already in memory. That means जो directory का जो file control block होगा वो already है, like inode structure or anything. Let the number of disk accesses required to insert a block in the middle of the file is NA and NB using file system A and B. तो पहले है contiguous allocation, मतलब array type, array, this contiguous. So there are 50 locations, right? You want to insert these 50 and 51, 50 and 51. You want to insert a new block. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? We will have to shift, boys and girls, we'll have to shift these 50 blocks, read and write operation, 50 blocks को shift करना होगा क्योंकि यहाँ पर free block available है. तो I need 50 read plus 50 write operations, 50 read plus 50 write operations, plus writing a new block is one additional access. So therefore this is nothing but 101 disk accesses with contiguous allocation. NA की वैल्यू ये है. लिंक्ड एलोकेशन में क्या होगा? लिंक्ड एलोकेशन में आई हैव लिंक लिस्ट, बॉयज एंड गर्ल्स, आई हैव लिंक लिस्ट लाइक दिस. I have a linked list like this. So I have to insert between 50 and 51. इन दोनों के बीच में insert करना है मुझे 50 and 51. So from the beginning of the linked list, I have to traverse up to 50 blocks. So therefore 50 read operations, reading through pointers 50 blocks. Yes, 50 blocks. Plus now updating the pointers. ये new block आपका जो memory में है आपको update करना होगा. This is one update operation, this is another update operation. So two disk write operation, two write operations for updating the pointers. 1 plus 2. So total disk operations required are 52. The value of NB is equal to 52, boys and girls. So NA plus NB, 101 plus 52, 101 plus 52 become 153. ठीक है? ऐसा वेरी सिंपल क्वेश्चन, कई बच्चों ने सही जवाब दिया. चलिए नेक्स्ट. ये सिंपल क्वेश्चन है आई नोट का. वी हैव ऑलरेडी डन 3-4 क्वेश्चंस. You take this as homework and work out. I will give you the correct answer. इसका correct answer आएगा 35 किलोबाइट्स. Yes, निशु कुमार, बिल्कुल सही है आपका. हाँ बिल्कुल गलत है. वंशधामेचा, if the address of the 50th block is already given, you can avoid that 50 disk operations. वंशधामेचा, only 2 disk operations होगा लिंक में 2 होगा. Yeah, the answer for this is 35 kilobytes. Work out in the same way as we did our previous 2 problems. अब नेक्स्ट यहां पर देखिएगा. चलिए ये तो सेम क्वेश्चन है, लेट मी डिलीट इट. सेम क्वेश्चन इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का जो अभी हमने वर्कआउट किया. हाँ, दिस क्वेश्चन आई वांट यू टू वर्कआउट प्लीज. ये डिस्क शेड्यूलिंग के ऊपर क्वेश्चन है, डिस्क शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है. प्लीज वर्कआउट एंड टेल, बॉयज एंड गर्ल्स, कम ऑन फास्ट. सिंपल क्वेश्चन है, डिस्क शेड्यूलिंग के बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. आई एम वेरी श्योर एवरीवन कैन वर्कआउट. आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा आंसर, मैं वर्कआउट नहीं करूंगा. यू शुड टेल द आंसर. डायरेक्ट क्वेश्चन है. यूजिंग SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, 201 cylinders numbered from 0 to 200. 201 cylinders numbered from 0 to 200, boys and girls. Come on, work out and tell. I will ratify your answer. Nishu Kumar has already given the answer. Very good. Other people, please work out. Yes. बहुत simple question है ये. So I am very sure you can do it. So I won't work. 3 is the correct answer. I ratify that 3 is the correct answer, boys and girls. और एक भी similar question है. चलिए इसका बताइएगा प्लीज. स्कैन एल्गोरिथम, कंपैरिजन बिटवीन स्कैन एंड शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट. द एडिशनल डिस्टेंस, द एडिशनल, दोनों का डिफरेंस वर्कआउट करके बताइएगा. शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एंड स्कैन, बॉयज एंड गर्ल्स. शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एंड स्कैन.
शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट और स्कैन का डिफरेंस बताइएगा। Uganda, you focus on your work. Don't worry about others. Don't go for comparisons. उन्होंने कितने बार किया, मुझे कितने बार करना चाहिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कितने बार करना चाहिए वो देखिएगा प्लीज। Come on, boys and girls, what is the answer for this? Yes, many people have given the answer. Uganda got it, very good. I think the difference is like 140 and 130, right? 140 minus 130 difference between the two is equal to 10. So therefore 10 is correct answer. Is it 140 minus 130? Have you got it like 140 minus 130? 140 may be using like scan and SSTF is 130. So therefore the difference is 10. Yes. Chaliye next. And these also similar question, similar to circular. ठीक है, वर्कआउट कीजिएगा। सर्कुलर लुक का क्वेश्चन है 2016 का, वर्कआउट कीजिएगा। इज यूजिंग सर्कुलर लुक, प्लीज वर्कआउट एंड टेल मी द आंसर। यूजिंग सर्कुलर लुक, ये बहुत सिंपल है, आई एम वेरी श्योर। Come on, boys and girls, anybody, what is the answer? The head is at cylinder number 63. 63 से लास्ट ट्रैक नंबर तक जाएगा, लास्ट मतलब लास्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट तक जाएगा सर्कुलर लुक।
वहां से गेट इनिशियलाइज टू द फर्स्ट रिक्वेस्ट। 63 से 191 जाएगा, 191 से 10 पर आएगा, 10 से फिर बेसिकली इट विल गो अप टू बिफोर 63 तक। युगांडा आई थिंक इट इज नॉट 382, 346 आएगा, 346। यस, 191 minus 63 plus 191 minus 10 plus 47 minus 10. Payal Supe, that is correct. 100% correct. 191 minus 63. 191 minus 63 plus 191 minus 10 for initialization plus 47 minus 10. 47 minus 10. ये आपका आंसर होगा 346. Circular look. चलो, this is another important question. Perhaps the last question, I believe. Important है, रीड कीजिएगा। मैं जनरली अपनी क्लास में सॉल्व करता हूँ ये क्वेश्चन। Those who are present in my have attended my sessions can answer this. Otherwise also other people can try. स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रीड कीजिएगा एक बार। 2 मिनट का टाइम हर एक के लिए। कम ऑन। Yes, Nishu Kumar, that's correct. Number of cylinders equal to number of tracks. Rohit, yes, this scheduling is also very simple and very important also. Very simple like CPU scheduling and important. You can expect questions on this. Rohit. Cylinder number and track number are essentially same. You have to apply shortest seek time first, and the power consumption, the power dissipation for moving the read write head, changing the direction is 15 milliwatts, and for every 100 tracks, 100 cylinders, the power dissipation is 20 milliwatts. So what is the total power consumption using shortest seek time first disk scheduling algorithm? तो SSTF से पहले वर्कआउट कीजिएगा। Using SSTF, you please work out this. These are the cylinder numbers: 72, 134, 20, 86, 116, 16. ये रिक्वेस्ट को SSTF से सॉल्व कीजिएगा। तो here I will work out 72, 134. Requests of the processes are 72, 134, 20 and 86, 20, 86, 116 and 16, 116 and 16. You have a disk with how many cylinders? There 200 cylinders numbered was 0 to 199. तो यहाँ पर आप 200 cylinders मार्क कर लीजिएगा। Zero to 199. Let's say this is half. Let's say this is 50. Let us say this is 150. And initially the read write head is at cylinder number
80. So perhaps 80 is here. 80. So you mark all these requests. 72. Maybe 72 is here. Then 134. Maybe 134 is here. And then 20. Perhaps 20 is here. 86. This is 86. 116. This is 116. And then 16. So from here, when you satisfy the request using shortest seek time first, so 80 to 86 will go first, 80 to 86, and then 86 to maybe 72, and then 72 to 116, 134, and then like that. So using SSTF, if you make a simulation, or if you make a trace using SSTF, total head movement you will see is 200, and number of times read write head changes its direction is equal to 3 times. ये आपके calculations आने चाहिए. When you make a trace using SSTF, total head movement will be 200 and number of times the read write head change the direction will be 3. So therefore power dissipation, power dissipation 20 milliwatts per 100 tracks. So 200 के लिए 40 milliwatts plus one time changing the read write head involves 15 milliwatts power consumption. So therefore 3 times into 15, so 45 plus 40, 85 milliwatts. So as a numerical answer type, the answer is 85 milliwatts. As a numerical answer type, answer is 85 milliwatt. Provided you get this answer, इसे आप आना चाहिए. Total head movement you should be able to get 200. If you are not getting it, means you are not comfortable with this scheduling. तो पहले this scheduling अच्छे तरीके से workout कीजिएगा, then you get all these specifications, all these statistics. तो answer for this question is 85 milliwatts. Okay, the answer for this is 85 milliwatts. So boys and girls, these were the questions of almost all the questions from 2010 to 2025 in all the topics. I have covered in two parts, part 1, part 2. Part 1 जो वीडियो ऑलरेडी मेरा है आप वहाँ पे देख सकते हो ऑन प्रोसेस कॉन्सेप्ट, सीपीयू शेड्यूलिंग एंड थ्रेड्स, और फिर सिंक्रोनाइजेशन, कंकरेंसी, डेडलॉक्स पर है. और आज के सेशन में हमने मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम पर कवर किया. फिर से एक बार कह रहा हूँ वो बच्चों के लिए जो रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, या बाद में आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, राइट, दिस विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ यू बेसिकली आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स. फाउंडेशंस आपके क्लियर होना चाहिए, वरना अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने का, दैट्स नॉट पॉसिबल. PYQ सीरीज इज नॉट मेंट फॉर दैट. ठीक है, PYQs में we have basically an assumption that you are already familiar with the concepts. So otherwise you will be compelled to write nonsense on the comments. I know it, and we don't really bother, because we are bothering only for serious and sincere GATE aspirants, not for those who are mischievous and irrational people. Okay? So I hope you will utilize this series and enjoy the sessions. At any point of time, if you have any questions, any doubts, please don't hesitate to ask. I have already given my Telegram channel. So here you can scan and get connected to me through Telegram channel and see clarifications. Okay? So next we are going to take up algorithms again in two parts, part 1 and part 2. Part 1 I will take up tomorrow at 10 a.m. So those who are interested can join and practice PYQs along with me and learn new shortcuts and new approaches. Thank you so much. Take care and good night. Okay.